Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are taking our lesson number 7, that is linear equations in a one variable. In the previous lectures, we have taken the introduction of linear equations, and then we have solved some example based on it, in which you have to find out the variable, the one variable which is given in your linear equations. You have to find out the value of it. Okay. So there are two types of a question in it. One in which only left hand side having the denominator, and second is in which right hand side also having the denominator. That means one type is that in which only the left hand side having the denominator, and second type is in which both the left hand side as well as right hand side having the denominator. Okay, so what is your first step? Your first step to solve the question is, you first write down the question again, then multiply the given equation with the product of your denominators. If there is only one denominator, then multiply it with it. If they both having the denominator, that is LHS and RHS, then multiply with the product of them. Why? Because we have to cancel the denominator to solve the equation. After that, after दो equations बनेंगे, you have to solve them by shifting the variables on the left hand side and values on the right hand side. Then to check the answer, whatever value come of your variable, put the value in the left hand side and then find out it is equals to the RHS or not. If LHS and RHS are equal, then the last statement is hence whatever value comes is the solution of your given equation. Okay, now your next topic is word problems. Now next topic is word problems. There are some word problems given in your book. Okay, so there is no particular method to solve the word problems. If you have to solve the word problems, you have to understand what is given, what is the information given in your क्वेश्चन. आपको जो स्टेटमेंट वहाँ पे दिया है वर्बली, आपको उसे समझना है कि वो क्या दिया हुआ है, उसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं. इट विल कम विद द प्रैक्टिस ओनली. ओके, सो आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ इक्वेशन फॉर्म एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल. That will be your answer. Okay, now in your book there are 18 solved examples. How many examples are there? There are 18 solved examples which you have to practice by yourself. आपको सारे 18 questions notebook में लिखने हैं and try to solve all the equations. अगर आप solutions देख कर भी लिख रहे हो तो आप स्टेटमेंट देखिए कि स्टेटमेंट से जो उन्होंने इक्वेशन बनाए वो कैसे बनाए, एंड एज सून एज यू रीच टू द इक्वेशन ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट सीइंग इन योर बुक. ओके, आपको देखकर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है. आपके अगर बिना देखे करोगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी होगा. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 7B. Okay, so the 18 questions you have to practice. Okay, because in the examination it is not necessary कि मैं आपको सिर्फ exercises के ही questions दूंगी. I can give you the solved examples also. So you have to understand how to solve the solved examples. Okay, तो आपको solved examples भी practice करने हैं. ठीक है, now which exercise I am solving is exercise 7. Okay, so 7B. Now, what is your question number 1? Try to understand the question. What is the information given in your question which you can represent it as the equation, represent it as equation and find out the value from it. Okay. So, your first statement is the difference of two numbers is 8. दो numbers हैं जिनका difference 8 है. ठीक है, आप दो numbers ले सकते हैं. One is a x, second is a y. But because you are solving the linear equations in a one variable, आप दो variables नहीं ले सकते. So if there is no condition that you can take the two variables, then how to show that the two numbers having the difference of 8? Okay, so the solution here, write it down the solution for the question number 1. What is your question? Okay. Let
your one number is x, then the second number will be x plus 8. Then the second number will be x plus 8. So write it down. Let one number be x. Let one number be x. Then the other number be x plus 8. अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा x plus 8. Okay, let one number be x, then the other number will be x plus 8. Okay, now you got two numbers, one is x and x, second one is x plus 8, and अगर आप निकालोगे दोनों का डिफरेंस आपको 8 ही मिलेगा. ठीक है. Now what is your next statement given? Your next statement is they are in the ratio 9:13. They are in the ratio 9:13. उनका रेशियो मीन्स जो हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट इज द रेशियो. दैट दे आर इन द रेशियो 9:13. ओके, ये जो दोनों हैं वो 9:13 के रेशियो में. ओके, सो यू हैव टू write it down in your question as they are in the ratio of 9:13. Okay, so the ratio, अगर ये दोनों रेशियो में है, the ratio of the numbers is equals to x upon x plus 8. Okay, x upon x plus 8. Okay, now according to the question, what is given? According to the question, we have 9:30. According to the question, we have x upon x plus 8 is equals to 9 upon 13. Is equals to 9 upon 13. Now this is the linear equation in one variable. This is the linear equation in one variable, and you know very well how to solve this equation. Okay, I am solving this equation in the next word problem if the equation form remaining steps are homework for you. Okay, अभी ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन बन गया है, इस पर आपको आंसर निकालना है. ये अब आपको आता है. इस क्वेश्चन में मैं आपको लिखवा दे रही हूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. नेक्स्ट जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे इक्वेशन मैं आपको डिराइव करके दूंगी, आपसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. हाउ टू सॉल्व इट? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी हैव टू कैंसल द डिनोमिनेटर. फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद the product of the denominators. Okay, so it will become, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो it will become x upon x plus 8 multiply with the 13 into x plus 8. Okay, so it will become 9 into 13 into x plus 8. आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? दोनों डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से, दैट इज 13 into x plus 8. आपने लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किए एंड राइट में भी मल्टीप्लाई किए. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज दिस टू गेट कैंसल्ड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज x into 13. Okay, and on the right hand side 13 get cancelled with the 13, it is 9 into x plus 8. Okay, now solve it. It is 13x, and on the right hand side it is 9 into x is 9x, and 9 into 8 is a 72. Now 13x, this 9x comes on the left hand side, it is 9x, minus 9x becomes, okay, this 9x becomes minus 9x, and it is equals to the 72. Now the next step is 13x minus 9x is a 4x, which is equals to 72. Now the next step is x is equals to 72 upon 4. अब डिवीजन में लिखो या अपॉन में लिखो, बोथ आर करेक्ट.
Okay, so 72/4 that is equals to 18. That is equals to 18 here. Okay, so now you have to find what is given there. Find the numbers. आपको दोनों numbers बताने हैं. आपने एक नंबर लिया है x, एक नंबर लिया है x plus 8. Therefore, one number is 18. x तो आपको मिल गया. One number is 18. One number is 18 and other number and the other number is 18 plus 8 and the other number is 18 plus 8 that is equals to 18 plus 8 is equals to 26. So that will be your solution for the question number 1. Okay, now the second question. The sum of the two numbers is 160. दो numbers है जिनका sum 160 है and they are in the ratio of 5:11. Find the number. Same question as the question number 1. In the question number 1 the difference is given. In the question number 2 the addition is given. Okay, so मैं आपको सिर्फ equation derive कर रही हूँ. ठीक है, so you have to write it down again the same. Let the solution for the second one. Okay, now statement देखो पूरे सेम रहने वाले. ठीक है, the first statement is let one number be x. let one number be x. दो numbers है, दो का addition निकालना है, उसमें से one number be x. Okay, then the other number will be. देखो जब subtraction दिया था तो आपने addition लिए थे. अब addition दिया है तो आप क्या लोगे? Subtraction. So it will become other number will be 160 minus x. Okay, the other number will be 160 minus x. Okay, now the ratio given is 5:11. The ratio given is 5:11. So the ratio of the numbers, now the ratio of the numbers is x upon 160 minus x. So according to the question we have what we have. According to the question we have x upon 160 minus x that is equals to 5/11. Okay, so now next thing is you have to find out the value of x. आप क्या करोगे? x की वैल्यू निकालोगे. तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपका एक नंबर होगा और जो अगर 160 में से उस नंबर को माइनस करोगे तो आपको सेकेंड नंबर भी मिलेगा. ओके, सो बोथ द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 are the same. In the question number 1 difference of the two numbers is given and in the question number 2 sum of the two numbers is given. If the difference is, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट that the one number be x. ओके, नाउ सेकेंड नंबर जो आप लेते हो, अगर आपको डिफरेंस दिया है दो नंबर का तो आप एडिशन लेते हो. जब आपको एडिशन दिया होता है तो हम सबट्रैक्शन लेते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स गिवन. तो आप सबसे पहले जिनको आपने एज्यूम किया उनका रेशियो लिख लो और फिर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, क्योंकि ये नंबर्स हमने एज्यूम किए हैं और ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, हम इन्हें क्या करते हैं? इक्वेट करके फाइंड वैल्यू x की निकालते हैं. ओके, नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस वेरी मच क्वेश्चंस ऑफ it. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आप इसे सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू मिलेगी. क्या होगा? आपको इफ यू हैव टू रिमूव द डिनोमिनेटर, if you have to remove the denominator here, you have to multiply both left hand side of the equation as well as right hand side of the equation with the product of the denominator, that is 11 into 160 minus x. 11 into 160 minus x. जब आप 11 into 160 minus x करेंगे तो इधर बचेगा 11x, इधर बचेगा 5 into 160 minus x. Okay, now 11x is equals to 160 into 5 is a 800 minus 5x. Okay, जो इधर minus 5x है उधर जाएगा plus 5x हो जाएगा, that is equals to 16x is equals to 800. x is equals to 800 upon 16, that is equals to x is equals to 50. तो आपका पहला नंबर आएगा 50 and your other number will be 160 minus
that is 110. ओके, ओरली मैंने आपको ओरली ऑलरेडी इस इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन बता दिया, बट यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आप देखो कि आपका x=50 आता है या नहीं आता है. ओके, सो द रिमेनिंग क्वेश्चंस वी आर चेकिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय, टेक केयर.